Let us see the next question. Piyush Loonker and Associates presently pay a dividend of ₹1 per share. यानी ये हमको दे रखा है D0 and has share price of ₹20. तो ये हमको दे रखा है P0. If this dividend were expected to grow at the rate of 12% per annum forever, what is the firm's expected or required return on equity using DDM dividend discount model approach? और फिर हमको सेकेंड पार्ट दे रखा है. I want you to tell me answer of the first part of the question in the chat box. So cost of equity is supposed to be found. Cost of equity is supposed to be found. So write down answer along with me. Working note number 1. Calculation of D1. It will be calculated as D0 into 1 plus G raised to 1. What is D0? D0 is 1 into 1.12 raised to 1. That comes to rupees 1.12. तो ये क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा. पर हमको कैलकुलेट करना है K. So calculation of K. It is D1 upon P0 plus growth rate. So D1 is 1 rupee 12 paise divided by P0 is 20 plus growth rate कितना है? 12%. So it is 1.12 upon 20. That comes to 0.056 plus 0.12. That comes to 0.176. That is 17.6%. ऐसा करके हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने का है. प्लीज राइट एन आंसर. Second part of the question. Instead of the situation in part 1, suppose that the dividend were expected to grow at 20% per annum for 2 years and 10% per annum thereafter. Now, what are the firm's expected or required return on equity? चलो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे वो आप चैट बॉक्स में लिखिए. मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर कैलकुलेट करने का प्रोसीजर चाहिए. तो फ्रेंड्स यहां पे हमको ऐसा दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में D0 was ₹1, P0 20, ग्रोथ रेट 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया D1 अपॉन P0 प्लस C. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में D0 is 1, P0 is 20. ग्रोथ रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, उसमें ऑल्टरेशन है. ऐसा दे रखा है कि पहले 2 साल का ग्रोथ रेट है 20% एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी का है ग्रोथ रेट 10%. और उसके ऊपर से हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. तो बेसिकली यहां पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए D1 अपॉन P0 प्लस G ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं. क्यों सर यूज नहीं कर सकते हैं? उसका रीजन बहुत सिंपल है. एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला हैज अ कंडीशन कि ये जो ग्रोथ रेट है ना वो कांस्टेंट फॉर परपेचुइटी होना चाहिए, जो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो नहीं रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर बाय प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो सीरीज. आपको कुछ लिखना नहीं, आप पहले समझ लीजिए. हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर ईयर 1 to ईयर 3. पहले 3 साल का डिविडेंड पर शेयर फाइंड करेंगे. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिविडेंड पर शेयर. फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 1 into 1.12 raised to 1, दैट इज 1 rupee 12 पैसे. सेकेंड ईयर का क्या होगा, 1 into 1.12 raised to 2, यानी 1 rupee 44 पैसे. सॉरी हाँ,
20% का ग्रोथ रेट है। This is 1.20 raised to 1, that is 1.20. 1.20 raised to 2, that is 1.44. उसके बाद थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट कितना हो जाता है 10%. So 1.44 into 1.10 raised to 1. That comes to 1.584. That is the way the dividend per share can be calculated from end of year 1 to end of year 3. उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of P2. P2 will be calculated as D3 divided by KE minus C. What is third year dividend? It is second year dividend. Sorry, D3 we already have found. D3 is 1.584. This is D3. Divided by cost of equity, उसको हम लोग x वेरिएबल असाइन करेंगे, माइनस ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट कितना 10%. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ P2. अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन. फिर हम लोग अच्छी तरह से आंसर लिखते हैं. ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2. देखो मैं कैश फ्लो सीरीज बना रहा हूं. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो कितना होगा 20 रुपए. सर 20 रुपए कहां से आए, देखो करंट प्राइस ये रखा है. ईयर 1 का इनफ्लो कितना है 1 रुपी 20 पैसे, तो देखो ये लिखा मैंने 1 रुपी 20 पैसे. ईयर 2 का इनफ्लो कितना है 1 रुपी 44 पैसे, यानी ये वाला वैल्यू. और उसमें सेकेंड ईयर के एंड का प्राइस जोड़ दिया जाएगा. सेकेंड ईयर एंड का प्राइस कितना है 1.584 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ग्रोथ रेट. So plus 1.584 divided by x minus growth rate. That is the way we will have the P2 value. अच्छा, ये जो हमारा ये कैश फ्लो सीरीज हो गया फ्रेंड्स, उसको क्या करना पड़ेगा, सो उसको सॉल्व करना पड़ेगा. उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, हम लोग एक x का वैल्यू अज्यूम करेंगे. x का वैल्यू अज्यूम करेंगे. लेट अस अज्यूम दैट से मैंने x का वैल्यू मान लिया कि 15% है. तो यूजिंग दैट 15% मैं P2 का कैलकुलेशन करूंगा. P2 का जो भी वैल्यू होगा उसको 1.44 में जोड़ दिया जाएगा. फिर इन दोनों का जो समेशन होगा उसको मैं डिस्काउंट करूंगा एट द रेट ऑफ 15% वंस अगेन, जिसमें ईयर 0 का कैश आउटफ्लो क्या होगा 20 रुपए. और इसका एनपीवी मेरे को 0 लाने का है. अगर 15% पे एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा के एनपीवी नेगेटिव करूंगा. और अगर 15% पे एनपीवी नेगेटिव है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करके मैं एनपीवी पॉजिटिव करूंगा. दैट इज द वे से वी विल बी हैविंग से द टू एनपीवीज टू बी कैलकुलेटेड, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव. फिर उसका इंटरपोलेशन करके वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द IRR, और वो जो IRR है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. पहले फ्रेंड्स इसका हम लोग आंसर लिखते हैं, उसके बाद मैं इसका आपको नोट लिखवाता हूं. आंसर के बाद नोट लिखेंगे ना तो हमको ज्यादा कनेक्टिविटी बैठेगा. चलो राइट एंड आंसर द क्वेश्चन. इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, comma, we cannot apply following formula to compute KE to compute KE, that on D1 upon P0
plus growth rate. Rather than that, further application of above formula is subject to a condition that growth rate has to be constant forever. Full stop. With paragraph right down, we will prepare a cash flow series from investor point of view to find KE, cost of equity. Now write down working note number 1, calculation of dividend per share from end of year 1 to end of year 3. So first year, second year, third year, dividend per share. It is 1 into 1.12 raised to 1. Sorry, 1 into 1.20 raised to 1. That is 1 rupee 20 paise. 1 into 1.20 raised to 2. 1 rupee 44 paise. 1.44 into 1.10. That is 1.584. Working note number 2, calculation of P2. It is D3 upon KE minus E. थर्ड ईयर का डिविडेंड कितना है 1.584. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है उसको एक्स वेरिएबल असाइन किया जाएगा. और ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट है 10%. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ a cash flow series comma IRR of which is K. उस पे हम लोग लिखेंगे ईयर 0, 1 एंड 2. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो कितना है 20 रुपीज. एंड ऑफ ईयर 1 का कैश इनफ्लो कितना है 1 रुपी 20 पैसे. एंड ऑफ ईयर 2 का कितना है 1 रुपी 44 पैसे प्लस 1.584 divided by x minus growth rate.
That is the way we have a cash flow series. Now we'll compute the IRR और वो हो जाएगा cost of equity. Read with paragraph. In order to compute IRR, first of all, we have to calculate P2, comma, the rate used for P2 will be used for NPV. Full stop. Positive and negative NPV will be interpolated to find IRR, that is cost of equity. Full stop. Try to calculate the IRR on your own and put your answer in the chat box. So write down answer. Calculation of IRR. In that write down working note number 1, calculation of NPV at the rate 16%. ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं randomly selected. 16% क्या उसका कोई रीजन नहीं है, तो उससे सबसे पहले क्या किया जाएगा, P2 का कैलकुलेशन किया जाएगा. इट इज D3 डिवाइडेड बाय K माइनस C. थर्ड ईयर का डिविडेंड कितना है 1.584 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 16%, लेस ग्रोथ रेट कितना है 10%. So we'll have the working like this: 1.584 divided by 6%. That comes to 26.4. ये कब का होगा, year to end. That is the way. So we'll make the calculation of the P2 first of all. Once you make the calculation of the P2, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग NPV का calculation करेंगे. So calculation of NPV. End of year 1 and end of year 2. Cash flow. फर्स्ट ईयर का इनका कितना है 1.20 है, that is this. सेकेंड ईयर का कितना है 1.44 है. प्लस 26.4, 1.44 plus 26.4, that is 27.84. Discounting at the rate of 16% cost of capital, and based on that, so the present value will be found. So the answer would be 1 divided by 1.16. First year factor is 0.8621. You press is equal to, again you'll get the second year factor 0.7432. So 1.2 into 0.8621, that is 1.03. 27.84 into 0.7432, that comes to 20.69.
So this is the present value of the cash inflow, 1.03 plus 20.69, 21.72. Less investment, 20. एनपीवी इज 1 रुपी 72 पैसे। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, 16% पे एनपीवी निकालेंगे जो पॉजिटिव है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा टू रिड्यूस द एनपीवी। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एट द रेट 17%। उसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले वापस P2 करेंगे। इट इज D3 अपॉन के माइनस सी। सो 1.584 divided by 0.17 less 0.10, ये 16 की जगह 17 हो जाएगा। So we understand that it is 1.584 divided by 7%. So 22.63. That is the way the P2 will be found. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। So it is year 0, year 1, sorry, it is end of year 1, end of year 2. Cash flows, it is 1.20, 1.44. Plus P2 is 22.63. So 1.44 plus 22.63, that is 24.07. इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 17%, और उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया जाएगा। सो इट इज 1 divided by 1.17. फर्स्ट ईयर फैक्टर इज 0.8547, second year it is 7305, 1.2 into 0.8547, that is 1.03, 24.07 into 0.7305, 17.58. So 1.03 plus 17.58, that is 18.61. Less investment, investment is 20. So NPV is 1 रुपी 39 पैसे नेगेटिव। ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी का कैलकुलेशन। सो नाउ IRR, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं K, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एनपीवी 16% and 17%. At the rate of 16%, NPV is 1 रुपी 72 पैसे positive. At 17 it is 1.39 negative. 16 और 17 का डिफरेंस कितना है, 1%। एनपीवी का डिफरेंस कितना है, 1.72 प्लस 1.39, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का एडिशन, दैट इज 3 रुपीज 11 पैसे। वी टेक द बेस ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वी अंडरस्टैंड दैट जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 1% का चेंज है, एनपीवी में 3 रुपीज 11 पैसे का चेंज है, तो जब एनपीवी में 1.72 का चेंज होगा तो डिस्काउंटिंग रेट में कितना चेंज होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। 1.72 divided by 3.11 into 1,
So 1.72 divided by 3.11 into 1, that comes to 0.55%. तो इसके बेसिस से हम लोग IRR कैलकुलेट करेंगे. It is 16% plus 0.55, that is 16.55%. फ्रेंड्स, बेसिकली IRR का आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेशन होता है. तो अगर आप कोई और रेट से डिस्काउंटिंग करके IRR फाइंड करते हो ना, तो उसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा. However, like you have to take less difference. That is the only condition that say we have. अदरवाइज तो एक्यूरेटली आंसर यही लाना जरूरी नहीं है. इसके थोड़े आगे पीछे होगा तो बिल्कुल वैलिड आंसर है, एक्सेप्टेबल आंसर है एग्जामिनेशन में. चलो गेट ऑन विद पैराग्राफ. Based on above working, we can say that cost of equity is 16.55%. Full stop. उसी में लिखो आगे. In order to compute IRR, we can take any cost of capital comma with that P2 is found and using the same rate NPV will be calculated. Full stop. We will try to get positive and negative NPV. Full stop. They will be interpolated to find IRR. चलो, let us see how to calculate the answer. First part of the question में हमको cost of equity find करना है. In that से there is a single growth rate given to us और question में clarification है, वो growth rate constant for perpetuity है. So हमने D1 कैलकुलेट किया और उसके ऊपर से K कैलकुलेट किया. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ रेट कुछ और होगा और उसके बाद परपेचुअली के लिए ग्रोथ रेट कुछ और होगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पहले 3 साल का डिविडेंड कैलकुलेट किया, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से 2 साल के बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स से द ग्रोथ रेट कांस्टेंट फॉर परपेचुअली होने वाला है. उसके बाद हमने P2 का एक इक्वेशन फॉर्म किया, D3 अपॉन K माइनस C. अभी हमारे पास एक कैश फ्लो सीरीज आ गया. From investor point of view, year 0 cash outflow है 20, year 1 का cash inflow है 1.2, year 2 का cash inflow है 1.44 और उसके अलावा हमको मिलने वाला है D3 अपॉन K माइनस C का वैल्यू. अभी हम लोग क्या करेंगे, x वेरिएबल को एक अज्यूम करेंगे और उसके बेसिस से हम लोग P2 का कैलकुलेशन करेंगे. जो भी P2 का कैलकुलेशन है से उसको हमने सेकेंड ईयर के डिविडेंड में ऐड करेंगे, दोनों को वापस ईयर 0 में डिस्काउंट करके विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ x. ऐसा हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे. तो पहले 3 साल का डिविडेंड, P2 का इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया. फिर IRR,
उस पर रैंडमली हमने 16% से शुरू किया, तो 16% से P2 निकाला, फिर हमारा एक कैश फ्लो सीरीज हो गया, उसको वापस 16% से डिस्काउंट करके एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू 17% पे वापस हमने P2 फाइंड किया, जिसमें आप देख सकते हो कि के का वैल्यू हमने 17% लिया है। अब ये कैश फ्लो सीरीज को से फॉर्म किया जाएगा, उसको 17% से डिस्काउंट करके एनपीवी निकाला जाएगा। 16 और 17 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे। इंटरपोलेशन के बाद IRR is 16.55%. That is the way so the IRR is calculated. और ये जो IRR है वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी